इस वीडियो में ये देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग मैक्स पेन इन ऑप्शन ट्रेडिंग। Max Pen represent the price point at which option seller will be experience the least amount of total maximum loss, while the option buyer will experience the maximum loss or max pain. The theory is based on the idea that the market will be trend towards the price where the largest number of option contract will be expire worthless at expiration. अभी आप इस चार्ट में देखें कि ये स्ट्राइक है 580, 560, 600, 620। ये जो है कॉल साइड में है, ग्रीन वाली, और रेड वाली जो है वो पुट साइड में है। तो ये अंडरलाइन प्राइस है इसका जो है 586.16 और मैक्स पेन है 594.00 पे। What is the max pain? Max pain is a concept in option trading offering the valuable insight into the potential market movement and trader behavior. Max pain refer to the price level where the greatest number of option contract would expire worthless, resulting in a maximum loss for option buyer. How to use a max pain in option trading? Max pain help identify the price level where the most option contract call and put expire worthless, potentially influencing price movement. Monitoring the max pain level can provide the insight into the potential market manipulation or tendencies near the expiration date. If the price gravitates towards the max pain level as a expiration approach, it could indicate the impact of the market maker seeking to minimize payout obligation. Max pain can act as a reference point for the trader to expect the price behavior around the expiration. When combined with the price, volume, and open interest, the max pain offer a more comprehensive view of the market sentiment and potential trends. Look at the example using real hood Robinhood option data. अभी आप इसमें जैसा बोले हैं कि ये दिसंबर 13 2024, दिसंबर 20 2024, अप्रैल 17 2025, फरवरी 21, जनवरी 31 18। अभी के ऑब्जर्वेशन है, वी आर ऑब्जर्विंग द December 13 2024 expiry that expire in one day. Max pain is 38.50, which about the dollar below the current price of $39.70. This max pain suggests that the market maker or the option seller have an initiative to influence the stock price lower, aiming to have the call contract they sold expire worthless. This can give us a clue on where Hood might head towards the tomorrow or even for the rest of the day today. When combining max pain with option volume and option interest, trader can make better informed trading decision. How to interpret the max pain chart? Uh, मैक्स पेन में अभी यहाँ पे देखेंगे कि मैक्स पेन जो इसका 12,000 पे है और प्राइस काल का है ये है। तो जो है स्ट्राइक प्राइस है 120, उसी के इर्द गिर्द है। इन द एक्सपायरेंस इन द एनवीडाज मैक्स पेन, द एक्स एक्सिस मेजर द स्ट्राइक प्राइस दैट आर अवेलेबल, द वाई एक्सिस शो द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एट द एक्सपायरेशंस. Together, these excess illustrate the distribution of the financial liability for the option seller, the point where the green and the red bar are lowest indicate the strike price where the option seller or market maker owe the list to the option buyer. Max theory implied that the expiration near the underlying price, current stock price will be gravitate toward the max pain price, minimizing the loss for hedge fund and including the maximum pain for retail traders. How to often is the max pain calculated? Max pain is updated each morning during the pre-market hour, reflecting the change in open interest. Since the open interest is updated only once a day by the OCC,
Max Pain as well. Open interest is updated daily after the close of the each trading sessions by the Option Clearing Corporation as the part of the clearing and settlement responsibility. The OCC calculate the distributed this data, providing the traders with the reliable, up-to-date view of the market activity and sentiment. It is implied to the note that Max Pain is not the real-time metric because no platform currently offer the live open interest data in US trade option. How to find the Max Pain on a option chart? किस तरह से आप कर सकते हैं? सेलेक्ट द ऑप्शन, चार्ट टैब्स, चूज द एक्सपायरेशन डेट टू एनालाइज द डाटा फ्रॉम एक्सपायरेशन डेट डाउन, व्यू द मैक्स पेन। अभी क्या काम करेंगे, इसी को निफ्टी ट्रेडर में जा करके अ, अच्छे से और देखते हैं बैंक निफ्टी का किस तरह से मैक्स पेन का डाटा कहाँ पे बता रहा है, क्योंकि निफ्टी का जो एक्सपायरी डेट है वो 27 तारीख को है।